topic of today's speech competition is patriotism. A very pleasant morning to esteemed judges, reverend fathers, respected teachers, and my dear friends. I am Ashvi Yadav And I'm Rakshita Soni, standing in front of you all for today's speech competition. Our country with its rich history, diverse culture, and unwavering spirit stand as a beacon of strength and unity. Today, let us reflect on the sacrifice made by our freedom fighters and countless heroes who paved the way for our nation. If I die for my nation, let me die, but don't let my country die. With the spirit of patriotism, I welcome the first participant, Ahan Sharma from class 1st A. Morning everyone, my name is Ahan Sharma. Today I want to speak about patriotism. Patriotism means loving our country, respecting our flag, our soldiers and the people who made India free. Good morning respected judges, principal, teachers and my dear friends. I am Avisha from class 1st B. Today I am here to say few lines on patriotism. Patriotism means love for the country. I would like to call Rushank Tayal from class 4th C. A wonderful morning to respected father, sisters, teachers and my dear fellow mates. I have been given an opportunity to stand before you all and say a few lines on the topic patriotism. To begin with, we need to first understand what patriotism means. Patriotism not only means fighting and shedding blood, rather showing true love and respect for the nation, which indeed helps in building a country with a better future, so that people may live in harmony, is also patriotism. The storm of hate never has the power to extinguish the lamp of love. And now I would invite Nakshat Balatia from class 1st D. Good morning everyone. My name is Nakshat Balotia from class 1st D. Today I am proud to stand here and talk about my country. Our nation is built on values of unity, diversity and freedom. Our flag is tricolor, saffron, white and green. Now, let us move forward to our next speech by Pat Murwani from class 2nd A. Here. It is my pleasure to say a few words about patriotism. Today we celebrate the 79th anniversary of our independence. It is a day to remember the sacrifices of countless heroes who fought for the freedom we cherish. Let us celebrate our rich culture and the vibrant heritage of languages, religions and traditions that make us unique. With this, I would like to call on the stage Anshula Sharma of class 2nd B. Faith in words, pride in our hearts, memories in our souls. Well said, Anshula. Independence was achieved at a considerable price. We can't disregard our freedom fighters' sacrifice. Now I would like to give a warm welcome to R.V. Rawat from class 2nd C. Good morning everyone. A warm welcome to our Independence Day celebration. I am R.V. Rawat from class 2nd C. And I am thrilled to share a patriotic speech that will fill your hearts with pride and patriotism. Let's embark on a journey of freedom, unity, and love for our great nation, India. Today, we are celebrating a very special day, India's Independence Day. On August 15, 1947, our country became free from British rule. Now, I invite Naksh Osatwal of class 2nd D to highlight the topic with his knowledge. Good morning, respected father, sister, teachers and my dear friends. Our topic for today is patriotism. What is patriotism? Patriotism is not just about hosting a flag or singing national anthem at ceremonies. It is a feeling, it is a heartbeat. It is a silent prayer of mother sending her son to the border. It is the hard work of farmer sowing seeds in the scorching sun. It is the resolve of a student
studying by candlelight with the dream of making India proud one day. It's not a nation nor a country. India is a subcontinent of nationalities. Now I would like to call Trishna Soni from class 30. Janani Janbhumishcha Swargadapi Garyasi. Good morning everyone, my name is Jeshna Soni and today I am going to talk about something very special, patriotism. Patriotism means loving our country. It means being proud of where we come from and wanted to make it a better place. It doesn't mean we have to be perfect. It means we care enough to try our best for our country. For me, patriotism is saying thank you to the soldiers who protect us, the doctors and teachers who help us. Ask not what your country can do for you. Ask what can you do for your country. Now, without any delay, let us call our next participant, Pratish Tak from class 3rd B. Good morning, Reverend Father, sisters, teachers, and my dear friends. Today I am standing here to speak a few lines about patriotism. I love my country, India, very much. India is land of braves, heroes, and freedom fighters. Because of them, we are free and living happily. A true patriot is a person who deeply believes in the unity and integrity of India. Now I would like to call Sia Chopra from class 3rd C. My name is Sia Chopra and I feel proud to stand here today and speak on a very special topic, patriotism. Patriotism means love for our country. It means feeling proud to be an Indian. We respect our flag, freedom and our soldiers. They can kill me, but they cannot kill my ideas. They can crush my body, but they will not be able to crush my spirit. Well said by Bhagat Singh. With the same spirit, I would like to call Vanya Jain of class 30. Reverend Father, sisters, respected judges, teachers, and my dear friends. Today I am here to speak about my country, India. My name is Vanya Jain and today I am here to speak about my country, India. I love my country, India. India is just not a land. It is my home where I laugh, play and learn, where my heart's life. India is full of colors, festivals and kind peoples. Thank you, Vanya, for this wonderful speech. अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों, अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हिंदी स्पीच कंपटीशन। हम आज़ाद हैं, ये आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे। हम आज़ाद हैं, ये आज़ादी कभी छीनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी आर्यन कांकरिया क्लास 1st A। अगर मैं जन्म लूं दोबारा इंसान में, भगवान देना मिटे हिंदुस्तान की। होठों पे गंगा हो हाथों में तिरंगा, होठों पे गंगा हो हाथों में तिरंगा। सुप्रभात, मेरा नाम अभियान काकर है। आज अपने प्यारे देश भारत के कुछ बातें कहने जा रहा हूँ। भारत हमारी मातृभूमि है, ये बहुत सुंदर प्यारा देश है। भारत में बहुत सारी भाषाएं, धर्म और त्योहार है। मिट्टी से जो रिश्ता है वो कभी छूट नहीं सकता। दिल में जो तिरंगा है वो कभी झुक नहीं सकता। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतियोगी को, जो अपने सुंदर विचार प्रस्तुत करे। कक्षा 1st B से सिया साहू। देश की सच्ची सजाई है, तिरंगा है हमारी शान, भारत देश महान। नमस्ते, मेरा नाम सिया साहू है। आज मैं आप सभी के सामने देशभक्ति के ऊपर कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। देशभक्ति का मतलब होता है अपने देश से प्यार करना। जिस देश में हमने जन्म लिया था वही हमारा भारत देश है। कोई आंख भी उठाएगा हिंदुस्तान की तरफ, कोई आंख भी उठाएगा हिंदुस्तान की तरफ, उन आंखों को फिर दोबारा दुनिया देखने नहीं देंगे। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी अबुद्धि चलानी क्लास 1st C। आदरणीय फादर, सिस्टर, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अभ्युदय चल्लानी है, मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। आज मैं देशभक्ति के बारे में बोलना चाहता हूँ। मुझे अपने भारत देश से बहुत प्यार है। नसीब है वो खून जो वतन के काम आता है, खुश नसीब है वो खून जो वतन के काम आता है।
जन्नत से भी प्यारा है वो तिरंगा जो लहराता है। अब मैं आपके समक्ष बुलाना चाहूँगी कक्षा फर्स्ट डी से स्तुवी वर्षिप। नसीब है वो खून जो वतन के काम आता है, खुश नसीब है वो खून जो वतन के काम आता है। जन्नत से भी प्यारा है वो तिरंगा जो लहराता है। अब मैं आपके समक्ष बुलाना चाहूँगी कक्षा फर्स्ट डी से स्तुवी वर्षिप। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। सुप्रभात, मेरा नाम स्तुवी वार्ष्णेय है, मैं कक्षा पहली द की छात्रा हूँ। महाराणा प्रताप से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक, मंगल पांडे से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक देशभक्ति हर युग में रही है। अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। अब मैं बुलाना चाहूँगी जिया विद्वानी क्लास सेकंड ए। तो नमस्कार, मेरा नाम जिया है। आज 15 अगस्त है, आज हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। यह भारत देश का राष्ट्रीय पर्व है। यह दिवस हमें शहीदों की याद दिलाता है। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कक्षा सेकंड बी से हिताशी मक्कर। आप अपना भाषण हमारे मध्य रखें। भारत बहुत ही सुंदर और महान देश है। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं, फिर भी हम सब एक है। हमारे देश को आजाद कराने के लिए कई वीरों ने प्राणों की आहुति दी में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब मैं बुलाना चाहूँगी अनंत जैन क्लास सेकंड सी। आदरणीय शिक्षकों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनंत जैन है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी को अपने प्यारे भारत देश के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारा भारत देश बहुत महान है। यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, कोई हिंदी बोलता, कोई पंजाबी, तो कोई गुजराती, तो कोई तमिल, पर हम सब भारतीय हैं, हम सब मिलकर रहते हैं। हमारे देश में बहुत से वीर सैनिक हैं। तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है। अपने इन्हीं विचारों को सुंदर शब्दों में पिरोकर ला रहे हैं कक्षा सेकंड डी से मारिया जैन। आत्मनिर्भर प्रधानाचार्य सभी अध्यापकों व भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मायरा जैन है, मैं कक्षा सेकंड डी में पढ़ती हूँ। मैं अपने देश के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर उसमें कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। कभी ठंड में ठिठुर के देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना कैसे होती हिफाजत देश की, कभी सड़क पर चलकर देख लेना। दोस्तों, यह आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, इस आज़ादी के बदले कितने वीर जवान शहीद हुए। इसलिए आज भी पूरा देश इन वीर सपूतों को याद करता है। बता दे कि तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता दे कि तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। अब मैं बुलाना चाहूँगी चाहत अग्रवाल क्लास थर्ड ए। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं चाहत अग्रवाल कक्षा 3 से। आज़ादी, देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराना और जय हिंद जय भारत बोलना ही नहीं होता। देशभक्ति का मतलब है सबका साथ सबका विकास। हमें आज़ादी कोई तोहफे में नहीं मिली, हमारे अपनों ने अपना खून बहाया है। हाँ ना मिला, मैंने ढूंढा बहुत वो जहाँ ना मिला। मेरे वतन जैसी ना जमी मिली ना कोई आसमां मिला। मैं आवाज़ देना चाहूँगी कक्षा थर्ड बी से अहाना जैन। आप अपना उद्बोधन हमारे मध्य रखें। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा नाम अहाना जैन। मेरी ओर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वो हवा हूँ जो तूफान साथ लेकर चलती हूँ। मैं वो हवा हूँ जो तूफान साथ लेकर चलती हूँ। अपने देश के खातिर कफन साथ लेकर चलती हूँ। अपने
अपने देश की खातिर कफन साथ लेकर चलती हूँ। मुझे क्या डराओगे मेरे दुश्मनों, मैं अपने दिल में बसा के हिंदुस्तान चलती हूँ, मैं अपने दिल में बसा के हिंदुस्तान चलती हूँ। शौक समझते हैं, मौत से खेलना हम शौक समझते हैं, देश के लिए जीना अपना धर्म समझते हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगी भव्य सोनी क्लास 3rd C। कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप सभी को मेरा सुप्रभात। यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि आज मैं आपके समक्ष देशभक्ति पर कुछ चंद शब्द कहने जा रही हूँ। हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है, जहाँ सब वर्ग के लोगों को सम्मान दिया जाता है। देशभक्ति का अर्थ है अपने देश से प्रेम करना, देश के सब नियमों का पालन करना व देश के विकास के लिए योगदान देना। अगले प्रतियोगी को जो अपने सुंदर विचार प्रस्तुत करे। कक्षा 3rd D से आदेश श्रृंग। आओ मिलकर करें तिरंगे की गरिमा का विस्तार, इस अवसर पर लहरा कर करे शहीदों के सपनों को साकार। राष्ट्रीय ध्वज की महत्वता का समझो, बिना इसके बाकी सब व्यर्थ। सदैव करना तुम तिरंगे का सम्मान, क्योंकि इसके लिए ना जाने कितने वीर हुए कुर्बान। नमस्ते आदरणीय फादर, सिस्टर, शिक्षकगण और मेरे सभी प्यारे सहपाठियों को मैं अतिक सिंगी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज इस अवसर पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि हमारा भारत देश एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, तो इसमें कोई आशंका नहीं, क्योंकि हिमालय उसका मस्तक है तो गौरी शंकर उसकी शिखा है। तो वहीं दूसरी ओर देश के गौरव वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। The wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it. Good morning, respected judges, principal, teachers, and my dear friends. I am Riyan Soda from class 4th A. Today, we gather to celebrate a powerful and profound emotion, patriotism. Patriotism is an act of courage and sacrifice for one's country. Patriotism is a noble sentiment, love, pride, and sacrifice for the sake of one's country and its people. It inculcates the feeling of pride and sense of responsibility towards nation. Indian freedom struggle is the best example of patriotism. Patriotism is important for nation building and for its development. At its core, patriotism is a deep-seated affection for the land we call home, its culture, its history, and its people. Our mother India had many patriots. In the past, some of them are Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, and Rani Lakshmibai. They sacrificed their life for our country. Subhash Chandra Bose said, "You give me blood, I will give you freedom." Bal Gangadhar Tilak said, "Freedom is my birthright and I shall have it." Chandrasekhar Azad said, "We will face the enemy's bullet. We have lived free, we have died free." We should all love our nation and do the good things to make our country a better place. I know value of zero. My soldiers are my hero. The military paid the cost. I love my country most. Neither Pandit nor Jat. I am Indian first. I am Indian first. I am Indian first. Let's embrace our responsibility with pride and dedication. Jai Hind, Jai Bharat, thank you. Patriotism is the feeling that connects every Indian. Now, I would like to call on stage Hridaya Baldua from class 4th B. The life of the nation is secure only when the people in the nation are honest and truthful. A very cheerful morning to one and all present here, respected principal, teachers, and my dear friends. This is Hridaya Baldua from class 4th B, standing before you all to present my views on the topic patriotism. Patriotism is not just a word, it is a love for the nation.
Patriotism is not just about hosting or waving flag. It is the commitment we make towards the welfare of the country. Some of the greatest examples of all time are Mahatma Gandhi, Jamshed Tata and Bhagat Singh. The highest privilege and the duty of a citizen is to cautioning the authority. Unity in diversity is our strength. Arise awake and stop not till the goal is reached. If a country has no right to live, it has no right to ask for freedom. Now, to ignite the spirit of the patriotism in our hearts, I would like to call Gitika Goyal from class 4C. We rise with the morning sun, tricolors shines on everyone. Unity and progress we embrace, India's dream we proudly chase. Good morning, Reverend Father, respected sisters, teachers, and my dear friends. Today we celebrate India, our beloved country. We are very lucky to live in the land of unity, rich in culture and history. The condition of true patriotism is to have faith in the unity and the integrity of India. For more explanation, I would like to call Shireen Khan from class 4th D. Good morning everyone, respected principal, teachers and my dear friends. Today I am here to speak few lines about patriotism. Patriotism means loving our country, it means being proud of our country. A patriotic person always respects the national flag, national anthem and soldiers who protect our nation. Now I call Pran Sadnani of class 5th A. Dear father, teachers and my dear friends. My name is Pranshul Sadnani and I am here to speak on a very special topic, patriotism. Patriotism means love and respect for our country. It just doesn't mean waving the flag or singing songs on special days. It's about how we feel for India every day in our hearts. I feel very lucky to be born in India, a land of brave hearts, rich culture and great values. I love my freedom and I respect my freedom. I love my country and I also respect my country. Now I would like to hand over the mic to Nalin Soumya from class 5th B. Father, honorable judges, teachers, and my dear friends. Today I am going to speak on a powerful topic, patriotism. Patriotism means love and devotion to one's country. It is a feeling that binds us all together regardless of our differences. A true patriot respects the values, traditions, and sacrifices that have shaped the nation. If I die for my nation, let me die, but don't let my country die. And now I want to call Mihir Daga from class 5th C. A man is a patriot if his heart beats true to his country. Good morning, Reverend Father, Reverend Sisters, esteemed judges, honorable teachers, and my dear friends. Today, I am Mihir Daga of class 5C. I am here to share my thoughts on the topic patriotism. What does patriotism mean to us? Is it just a flag, a song, or a gesture? Or it is something more profound? A sense of responsibility towards our nation. Patriotism is about loving our country, its people, and its value. It's about being proud of our heritage and our achievement. The true patriotism is to serve the citizen of the country and live as a family. To throw some more lights on this topic, I would like to call Jayan Magnani from class 5th D. Blood, a farmer's sweat. A soldier's blood, a farmer's sweat. Their patriot dreams we can't forget. The torch they lit shines so bright, guiding us with a fearless light. Good morning, respected father, teachers, and my dear friends. I, Jay Maghanani of class 5th D, would like to share a few words on patriotism. Patriotism means love for one's country, but it is not just about our words. It is about our values, our actions, and our responsibilities as citizens. A true patriot puts the country above selfish interests and works all together for its progress and unity. India doesn't need more people who says, I love my country, I love my country. India needs people who prove them in schools, villages, startups, farms, and in their daily life. Good morning, everyone. Respected sister, teachers present here, the judges who are here, and my dear students. First of all,
I would like to congratulate all the participants for their wonderful presentation performance today. It was such a joy to see our young students speak with so much confidence, clarity, and enthusiasm. Each one of you who spoke from here has shown that you have the courage to stand before an audience and express yourself. That is something very special, and I am proud of all the students today spoke from here. To the teachers and the parents who are not present just now here, thank you for your guidance and support in preparing the students so very well. Competitions like this not only build communication skills, but also it boosts self-confidence, which is very important from a very young age. Dear students, whether you won a prize or not today, remember, every time you participate, you grow. Keep learning, keep speaking, and always believe in yourself. Thank you. God bless you all. Thank you, Father, for your motivation. Now, I call Sister Mariola to announce the results. My dear students, hearty congratulations to all the participants of today's competition, Hindi and English, on patriotism, on the theme of patriotism. And also, hearty congratulations to all who are in the audience, sitting for such a long time, patiently listening, sometimes talking, of course, but also listening to what is happening here on the stage. I'm happy to announce the prize winners of today's competition. First, we take the English extempore competition. The first position goes to Jesna Soni of class 3rd A. Put your hands together. Place goes to Naksh Osatwal of class 2B. That there is a difference of just 1 mark between Jesna and Naksh, between the first winner and the second. And the third position is shared by R.V. Rawat of class 2C and Vanya Jain of class 3D. Give them a hearty applause. And now for the competition in Hindi. The first position is shared by 2 persons, Stuvi Varshe of 1D and Chahat Agarwal of class 3A with equal marks of 80. Give them a hearty applause. The second position goes to Bhavya Soni of class 3C. Put your hands together for her. And the third position goes to Sia Sahu of class 1B. Hearty applause. Not yet over. I'm happy to announce the competition for class 4 and class 5. First, we take up the English speech competition. The first position goes to Jayan Megnani of class 5th B. Second position to Nalin Somya of class 5th B. And the third position to Gitika Goyal of class 4C. Put your hands together. And the Hindi speech competition of class 4 and 5. First position goes to Devik Bansal of class 5th B. Second position to Ishita Jeswani of class 4A. And third position to Anant Jain of class 5th D. Hearty congratulations to all the winners.